morning. Good morning, guys. How are you? Now, your running chapter triangle. Today we discuss here the in previous class we discussed the question number first, second, third, and fourth. Now today we discuss here the question number 5. Clear? It's a very important question. This is asked in 2012, 10 and 11. 2010, 11 और 12 में ये क्वेश्चन जो है बोर्ड में पूछा गया था, जो आपके सामने हम डिस्कस करने चल रहे हैं. दिस क्वेश्चन ऑक्स इन 2010, 12 and 11 CBSE board examination. Now look here, is given the question here. Here is given the questions D, E and F are the respectively the midpoints of a sides AB, BC and CA. Clear? Of a triangle ABC. तो फर्स्ट we draw here is the triangle ABC. पहली चीज़ तो हम यहाँ पे एक ट्रायंगल बना लेते हैं. फर्स्ट we draw here is the triangle ABC. This one is triangle ABC. Their sides and their vertices are clear. ABC and DEF are respectively the midpoints of side AB. अब AB का मिड पॉइंट क्या हो गया? दिस वन इज द D. AB is midpoint D. BC is midpoint E. This point is E, and F is the midpoint of CA. F is the midpoint of the CA. This one is clear. And find the ratio of areas of triangle. अब यहाँ पे दो ट्रायंगल्स हमें मिल गए. Join these points. क्लियर? पॉइंट दिस पॉइंट्स भी जॉइंट हियर. तो आपसे पूछ क्या रहा है, हमसे फाइंड करने के लिए कह रहा है व्हाट वी फाइंड हियर. फाइंड द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ ट्रायंगल DEF एंड द ट्रायंगल ABC. ABC और ट्रायंगल DEF के एरिया का रेशियो क्या होगा. क्लियर? यहाँ पे हम जो आप क्लास 9th में पढ़े होंगे मिड पॉइंट थ्योरम. क्लियर? वी यूज़ हियर द मिड पॉइंट थ्योरम. यहाँ पे हम क्या करेंगे? वी यूज़ हियर द मिड पॉइंट थ्योरम विच स्टेट दैट लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ a triangle is parallel to the third side and its length is equal to the half of the length of the third side. This one is the midpoint theorem, MPT. We already discussed in class 9th. Clear? To find its relations between triangle ABC and triangle DEF. Find the relation करना है. Clear? तो so here the solution of this question here. Solution here is given that, look the solution. Look the solution here. First we draw triangle ABC. हमने triangle ABC draw कर दिया, तो लिख दीजिए draw a triangle ABC. Draw a triangle ABC and DEF, and these points is find in your questions. D, E and F are the midpoints of a side AB, BC and CA respectively. Clear? So draw the triangle ABC and DEF are the midpoints of the side AB, BC, CA. Clear? Respectively. Join the points. Points को हमने join भी कर दिया. Join the points. Join the points DE joins the points. Points को हमने क्या कर दिया? Join कर दिया. Clear? Join the points. चाहे आप लिख सकते हैं D, E and F. Joins the points D, E and F. Clear? Join the points here. Clear? हमने दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया, तो वी फाइंड हियर इज अनदर ट्रायंगल. हमें एक ट्रायंगल और मिल गया. वी फाइंड हियर बाय द मिड पॉइंट थ्योरम.
अब हम किस पे आ जाएंगे? बाय द मिड पॉइंट थ्योरम, बाय द मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम, थ्योरम MPT, जिसे हम शॉर्ट में क्या लिखते हैं? MPT, मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक, अब मिड पॉइंट थ्योरम में आप देखिए DF पैरेलल है किसके? BC के, तो DF इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC। दिस वन इज राइट नाउ, DF इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC, क्लियर? एंड DE किसके होगा? हाफ ऑफ AC। D इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC। यहाँ पे ये मिड पॉइंट्स हो गए। अब D इज पैरेलल टू AC है, तो मिड पॉइंट थ्योरम के अकॉर्डिंग पैरेलल साइड्स हैं, तो जो पैरेलल थर्ड साइड से क्या होती है? हाफ, तो हाफ ऑफ AC। D इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC। एंड नेक्स्ट ईयर इज EF, EF इज पैरेलल टू AB। EF क्या हो गया? AB के पैरेलल हो गया। दीज आर द मिड पॉइंट्स, सो EF इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB and EF is equal to half of AB. Clear? This one is the find through the midpoint theorem. इसे हमने कैसे फाइंड किया? By the midpoints theorem. Clear? अब देखिए in triangle, here is the two triangles. In a triangle DEF and triangle ABC. Triangle, look here the triangle DEF and triangle ABC. Here is given that two triangles. Clear? Now we find here DF, DM proportional to BC, DM is proportional to, and DE proportional to AC, and look here that EF is proportional to EF, AB. Clear? These are, and these are the half of from equation first. Equation first हमने क्या लिखा? This one is the DE and these are the equation first, from equation first. Clear? Equation first से हमें क्या मिल गया? DF is proportional to BC, DE proportional to AC equal to EF proportional to AB is equal to half. Clear? And now what say about this? Clear? Look here that not here is ABC. Let here triangle not ABC. Look here this triangle not ABC. Look here the triangle CAB. CAB or ABC, but these things are similar. Clear here? Now here triangle. So triangle DEF is a similar triangle, DEF is to similar triangle CAB by the rule of similarity. Rule of similarity is here is the SSS similarity criterion. Similarity criteria SSS के through this one is a similar triangle. This one is a similar triangle. This one is a similar triangle. Clear? This one is a similar triangle. This one is similar triangle here. Clear? Now look here.
can erase this portion here. Area of triangle DEF is ratio of area of triangle CAB, area of triangle CAB, clear? And this one is equal to D square DE square is proportional to here CA square. This one is clear. D square is equal to CA square. यहाँ पे हम कौन सी triangles को use कर रहे हैं? Here is use the theorem of area of similar triangle. Area of similar triangles की theorems को हम जब use कर रहे हैं तो now area of triangle DEF proportional to area of triangle CAB is equal to their side के squares. Clear? तो DE square upon CA square. Clear? Now look here that what is given that here area of triangle, look that CDE, D is equal to half of AC, D is equal to half of AC, half of AC, या इसको कर देते CA square. Clear? And CA is equal to, and CA is equal to, here is given that this one is the same, here is put here CA square. Now we find here 1/4 CA square upon CA square. So what we get here? We get here this one is CA square upon 4 CA square. CA square cancel. We get here 1/4. So here is the ratio. We find the ratio here 1/4 or 1:4. 1:4. Hence the required ratio. यहाँ पे लिख दीजिए. Hence the required ratio. Hence the required ratio 1:4. Clear? This one is your answer. Clear? Now see the question number 6 here. Question number 6 is given. Look the question. We write here. Now look here. Question number 6. Question number 6 we write here. Prove that the ratio of area of two similar triangles. Prove that the ratio of area of two similar triangles is equal to the square of the ratio of their corresponding medians. Clear? यानी वो उसके corresponding medians के square के equal होता है. Clear? Now here the first we let this triangle solution here look. Let triangle ABC and PQR. हमने दो triangles ले लिया, triangle ABC and triangle PQR. Be the two similar triangles. दोनों क्या हैं? Both are the similar triangles. Clear? Now look here. Let AD be the median of triangle ABC. ABC triangle में D is the median of ABC, BC. Clear? And PM is the median of triangle PQR. And PM is the median of triangle PQR. Clear? Then D is the midpoint of BC. D क्या है? Is the midpoint of DC. And M is the midpoint of QR. Clear? यहाँ पे दे रहा है कि D जो है midpoint है किसका? BC का. और QR is the midpoint of M is the midpoint of QR. Clear? Now is the midpoint of QR. Look here, this one is here. Here we also have this. हमें और क्या भी दिया है? तो we have here is the triangle ABC is a similar triangle. Already यहाँ पे दे रहा है two similar triangles. तो so write this one is the triangle
ABC is a similar triangle PQR. Clear? This one is also given here. कह रहा है कि triangle is also here given. Triangle ABC is a similar triangle PQR. ABC क्या है? Similar to the PQR. Then angle B is equal to angle Q. So this one is right here. Angle B is equal to angle Q. Clear? Similar triangles है तो क्या होंगे? This one is the right equation first. Clear? Since corresponding angles are equal, जो corresponding angles होंगे वो भी क्या होंगे? Equals होंगे. किसी भी triangles के अगर similar triangles हैं तो उसके जो corresponding angles हैं वो भी क्या होंगे? Equal. Now look here. Next point here. Also here, AB proportional to the PQ. Also light here. AB proportional to here is PQ equal to AB proportional to Q, BC proportional to QR, BC proportional to here QR. This point. अब कह रहे हैं this one also, अगर ये similar है तो ये भी कह सकते हैं कि since the ratio of the corresponding sides are equal, जो corresponding sides हैं उनका जो ratio होगा this one is also equal. Clear? Now we'll right now this one is AB upon PQ या AB proportional to PQ is equal to BC. D is the midpoint, so this one is right here 2BD. BC को हम क्या लिख सकते हैं? 2BD and QR को हम क्या लिख सकते हैं? 2QM. Clear? This one is right. B is the midpoint. तो BC को हम क्या सकते हैं? 2BD and QR को हम लिख सकते हैं 2QM. Clear? M is the midpoint है. तो midpoint होने की वजह से इसे हम ऐसा लिख सकते हैं. Clear? तो we write this one is a cancel. So write this one. AB proportional to PQ is equal to BD upon QM. This one 2 से 2 cancel, BD upon QM. This one is clear. Now this one is equation here second. इसे हम क्या मान लेते हैं? ये equation second है. Clear? Now look that here. Next points in a triangle. Can I erase here? This portion here. Now here is given that triangle ABD. Look here this triangle ABD. Clear? ABD. So in triangle ABD, in the triangle ABD and the triangle here is PMQ. Next triangle here is a PQM. Another triangles here. This one. Clear? Can show you this one is a similar. Angle ABD. Angle ABD equal to angle PQM. This one is given. अगर इसे देखें तो ये फॉर्म इक्वेशन फर्स्ट से हमें मिल गया. फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट अगर इसे हम ले लें तो ये हमारे फर्स्ट इक्वेशन से मैच कर रहा है. क्लियर? एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q. ऑलरेडी सो ये क्लियर. तो एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल PQM. दिस पॉइंट इज क्लियर. नाउ लुक हियर. AB proportional to PQ. अगर AB proportional to Q क्या ले रहे हैं हम? PQ and BD proportional to here QM. This one is clear. BD proportional to QM. इसे देगा ये आप देखें आप from equation
फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। अब देखिए हमें फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड से हमें मिल गया, दिस पॉइंट इज क्लियर। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी डी, सो राइट दिस वन, triangle ABD is a similar triangle PQM, is a similar triangle PQM by the rule of SAS, similarity, ठीक है, criteria के through. This one is a SAS rule के according, this one is a similar triangle. Clear? Then we write AB proportional to PQ is equal to, AB proportional to PQ is the right AD proportional to PM. This one is clear. AB proportional to AD proportional to here PM. AD proportional to PM. क्या कह रहा है कि सिंस रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग जब सिमिलर हो गए तो रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, ये भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। नौ एरिया ऑफ ट्रायंगल, अब देखिए हम लेते हैं ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज proportional to area of triangle, second is the PQR equal to, थ्योरम हमने यूज किया कौन सी, यूजिंग द थ्योरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। तो सिमिलर ट्रायंगल्स AB स्क्वायर proportional to PQ square, AB square proportional to PQ square. क्लियर? यहाँ पे हमने कौन सी थ्योरम यूज़ की, यूजिंग हेयर द थ्योरम एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स की थ्योरम्स को हम यूज़ कर रहे हैं। तो दिस वन इज द राइट एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स के इज प्रोपोर्शनल स्क्वायर्स। क्लियर? AB स्क्वायर अपॉन या प्रोपोर्शनल टू PQ स्क्वायर। क्लियर? नाउ दिस वन इज राइट AB square from third, equation third, we write here, where is goes the equation third, this one is equation third, look that area of triangle, now area of triangle ABC is proportional to area of triangle PQR is equal to, here AD square upon PM square. AD, this one is the third, upon PM square from equation third. इक्वेशन थर्ड से हमें ये मिल गया। दिस वन इज द प्रूव्ड हियर, यही हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। क्लियर? दिस वन इज प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। क्लियर? नाउ वी डिस्कस नेक्स्ट 3 questions in next video. Till to wait for the video. Clear? Thank you.